Hi friends, welcome to our channel. So in lecture we have seen the classification of transducer and characteristics of the transducer. Okay, so what is transducer? Transducer is nothing but the device which is converts non-electrical quantity to electrical quantity, or vice versa. Okay, means any physical quantity we wish to convert electrical energy, like physical quantity means pressure, temperature. So we can change it to the electrical signal like current, voltage by use of the transducers. Okay, so uh, in active and passive transducer, first of all we will see the passive transducers. Okay, so what is passive transducer means passive transducer means it required external source of energy for the working of passive transducer. Okay, means these transducers need external power supply to their operation. Okay, so they are not the self generated. Okay, so in passive transducers there are three types, means resistive transducers, inductive transducers and capacitive transducers. Okay, so a DC power supply or an audio frequency generator is used for the external power source. Okay, ये ट्रांसड्यूसर है, उसके ऑपरेशन के लिए एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, सो एक्सटर्नल पावर सोर्स कैसे हम यूज़ करते हैं कि डीसी पावर सप्लाई होता है या फिर ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, उसको हम एक्सटर्नल सोर्स से. ओके, सो इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी डिफरेंट पैसिव ट्रांसड्यूसर्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर. So resistor transducer are those the transducers in which resistance changes due to the change in some physical phenomenon. Okay, कि जो physical phenomenon है उसको अकॉर्डिंग resistance है वो change होता है resistance transducers में. Okay, so the resistance of a metal conductor is expressed by simple equation like okay, I hope you all are familiar with this equation. R is equal to rho L by A. Okay, R means resistance, rho means specific resistance of the conductor material, L means the length of conductor in meters, and A is the cross section area of conductor in square meters. Okay, so when a strain produced by a force is applied on wires, then L increase means length increase and A area decreased. Okay, so R will be increased. Okay, so this simple principle was used in the resistance transducers. Okay, resistive transducers. Okay, so there are four types of resistive transducers. First is potentiometers, thermistors, strain gauges and the resistance thermometers. Okay, so the translation and rotational potentiometers operate on the basis of change in value of resistance with change in length of the conductor. So this property can be used for the measurement of linear or rotational displacements. Okay, and strain gauge is operate on the principle resistance of a conductor or semiconductor changes when strained. Okay, strain gauge है, उसके ऊपर जो strain आता है उसकी वजह से उसका लेंथ है, रेजिस्टेंस है, वो चेंज होगी. सो दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड द प्रेशर. ओके, सो along with the change in temperature in resistance thermometers, the resistivity of the material also changes. Okay, so this cause change in resistance. So this property can be used for measurement of temperature also. Okay, so in your book first topic is resistance type temperature sensors, means resistance temperature detector. Okay, so what is RTD, resistance temperature detector? so हम RTD से स्टार्ट करेंगे, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे. इस आज के लेक्चर में मैंने दो सिंपल स्मॉल वीडियोस ही अपलोड किए हैं क्योंकि आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर है हमारा इस फ्राइडे को. ओके, फ्राइडे हमारा नेक्स्ट लेक्चर 2 बजे होता है, उसमें हम फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, उसकी टेस्ट है. ओके, सो you have to prepare about that. Okay, so नेक्स्ट फ्राइडे मीन्स 8 तारीख को आपकी फर्स्ट चैप्टर की टेस्ट है.
फर्स्ट चैप्टर मैंने वो फिलोसॉफी ऑफ मेजरमेंट है उसकी टेस्ट है. ओके, सो ऑन 8th January Friday at 2 p.m. The test will be assigned on Google Classroom. So test will be 1 hour. ओके. सो एक आवर का टाइम है आपके पास. और उसके बाद आपको आंसर शीट है जो उसको आपकी PDF बना के वो जो आपको मिड एग्जाम में जो करते थे, ओके, उसी तरह आपको आंसर शीट है, आंसर उसकी PDF है, वो आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड करनी है. ठीक है. सो फ्राइडे टेस्ट है. उसके बाद मंडे हमारा वीडियो लेक्चर होता है, उसमें हम ये आगे का टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे. RTD रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर वो सब. ओके. सो if you any query, any doubts related, any question, then you can contact me directly. Okay, thank you.